So, ladies and gentlemen, boys and girls, a very, very good evening to one and all. We have a very, very special guest with us today. We have Shankar Verma. He's 37 and he's from Lucknow, and he's an interior designer. And we have the angel coach Sulagna. Sulagna is from Odisha, right? And I was informed that Shankar was having health issues like appendicitis from last 5 months, and he lost weight. Doctor asked for surgery, but it didn't happen. 100% reversed. So he was taking a lot of medicines. I don't know to take out the medicines, but a lot of medicines. Then he was having gas and bloating from last almost 2 years. 100% reversed, and he was taking Pandy and Cyroid medicines like that. Stopped right after 1 week of following the therapies that we give and the diet plans. Anxiety, he was having 100% from 1 year, 100% reversed, and he was having medicines for anxiety also like Clonafit and Etizolam 20.25 mg. It was completely gone right after the first month. And other improvement is he has lost lot of weight. He became very thin, and now he is gaining weight. Behavioral change from lazy to active, better lifestyle, choice for food, quality life, able to focus on work, body feels light, improved self-confidence, quality sleep, and all the medicines of his appendicitis has gone. No gas, no bloating medicines, no anxiety medicines, completely stopped, and he is living a beautiful life. So let me come to Shankar. Shankar, if you can please unmute yourself, and कैसी आपकी जर्नी रही, over to you जी. हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड Good इवनिंग evening. एवरीवन। Good सबसे evening. पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे लोगों को। Thank you. मेरा ऐसा था कि मैंने 2 साल हो गए मुझे जो है गैस और ब्लोटिंग का इशू हो रहा था। और जी. वो इशू जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया काफी ज्यादा। बढ़ने की वजह से या शायद मेडिकेशन की वजह से या एक जो लाइफ स्टाइल मेरा खराब था उसके चलते, जी. तो वो बढ़ते बढ़ते फिर वो एनजाइटी में कन्वर्ट हो गया। मतलब मुझे रात को कभी ऐसा हुआ कि सीने में दर्द हुआ, या ऐसा गैस चढ़ गई, ऐसा कुछ फीलिंग आया, या नींद नहीं पूरी हुई गैस की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से, वो धीरे जी. धीरे धीरे फिर एनजाइटी में हो गया था। तो जी. मैं क्या कि एक तो मुझे क्या हो रहा था कि जब भी गैस होती थी तो एंटासिड लेते थे। जैसा कि जी. डॉक्टर ने बोला कि जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो 2-3 दिन 4 दिन लेना, फिर नॉर्मल राइट. हो जाए तो छोड़ देना, या डाइट वगैरह अपना खिचड़ी खा ली या दही खा लिया, इस तरह से करना होता था। तो इसी जी. तरीके से चल रहा था। अब क्योंकि काम भी कर रहा है, भाग दौड़ भी करनी है, तो उसके दौरान जैसे भी हो सकता था तो दवा लेना आसान लगता है, तो इजिली आदमी जब भी उसको गैस हुई दवा जी. ले ली, ऐसे करते। तो फिर मुझे लास्ट 1 ईयर से एनजाइटी होने लग गई थी बहुत ज्यादा। और राइट. एनजाइटी जो थी वो मुझे हेल्थ को लेकर ही ज्यादा थी, क्योंकि मैं दुबला भी हो रहा था, खाना भी मुझे कई बार डाइजेस्ट नहीं होता था, तो बाहर का खाने का मन नहीं होता था। और अगर घर में आने के बाद ही आप खा सकते हैं, तो राइट. इस तरह से चीजें चल रही थी। तो उसी बीच में फिर मैं सर्च कर रहा था कि कैसे इसको मैं रेक्टिफाई करूं विदाउट मेडिकेशन। मैं देख ही रहा था कि मेडिकेशन की वजह से इश्यूज होते हैं, ऐसा मुझे कैसे था पता नहीं, लेकिन मैं मन में था ऐसा। तो एक राइट. बार मैंने फेसबुक पे आपका ऐड देखा, और जी. फिर उस ऐड को मैंने ज्वाइन किया, और आपका जो सिल्वर मेंबरशिप लिया मैंने। जी. और इत्तेफाक देखिए ऐसा हुआ कि मैंने 2 डे का जो हाई वर्कशॉप लिया, हम्म. मुझे लगता है 27 और 28 मार्च को था। जी. और 27-28 मार्च को था, और 31 मार्च को मुझे अपेंडिसाइटिस का पेन हुआ। जी. और बहुत भीषण पेन था वो, बहुत ज्यादा। वो फिर आप लोगों की गाइडलाइन मिली मुझे, और उसके बाद में फिर चीजें हुई। तो जो भी डाइट प्लान थे, जो भी प्रिकॉशंस थे, या जो भी आप लोगों ने प्रोटोकॉल्स बताए थे, वो मैंने किए। राइट. और मुझे लगता है कि शुरुआत करने के 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मुझे जो है गैस वगैरह का इशू तो बिल्कुल खत्म सा हो गया। मुझे अब उसके बाद दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ब्यूटिफुल. और उसके बाद में क्योंकि अपेंडिसाइटिस जब हुआ तो उसकी मेडिकेशन भी थोड़ी शुरुआत हो ही गई थी, जी. बट वो भी धीरे 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 छूट गई। और मुझे लगता है 1 महीने के अंतराल में सारी दवाएं बंद हो गई, कोई भी दवा। सर्जरी सर्जरी में आपके लाखों खर्च होते हैं, वो भी बच जाते हैं, और उसके बाद सर्जरी की जो हाँ, साइड बट इफेक्ट होते हैं वो भी. मैं ब्लेस्ड फील इसलिए कर रहा हूँ ज्यादा कि अगर मैंने हाई वर्कशॉप नहीं ली होती तो राइट. सर्जरी तो करा ही लेता मैं। राइट. 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 सर्जरी तो ब्यूटिफुल. फिर करा ही लेता मैं जाके, क्योंकि ऑप्शन नहीं देते वहां पे किसी तरह का। राइट. बट अमेजिंग. मैं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। मैं 2 दिन में मैंने इतना सुन लिया था, तो मुझे लग रहा था कि कोई ऑप्शन होगा ही। देन फिर आपके यहाँ कांटेक्ट करके चीजें हो गई। और राइट. अभी तो राइट नाउ सब सारे इश्यूज, मेडिकेशन बिल्कुल नहीं है। और जो भी चीजें आप लोगों की तरफ से है गाइडलाइन डाइट वगैरह, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो वेरी अच्छा है नाइस. सर। वेरी नाइस. थैंक यू सो मच शंकर. चलिए, सो आपके कोच के पास आते हैं, एंजल कोच सुलगना. जय उड़ीसा. सुलगना, जय उड़ीसा. सो बताइए कैसी ये जर्नी रहे, हाउ इट वाज पॉसिबल सुलगना, इट वाज मिराकुलस, आपने सर्जरी रोक दी, कमाल है. राइट. या.
Over to you. So, about my introduction, I'm with GoNature since last 6 years as a senior nutritionist and working with Vishal with a lot of interesting case studies. And so thank you, Vishal, for giving me this opportunity to work with Shankar Verma. And thank you, Shankar, for finding out some time from your busy schedule and coming to this Hall of Fame interview. And we didn't face any challenges. Right. So the best part about him is he has a very strong willpower. Him to uh, achieve his health goal by following the health journey. This journey that he has taken. So in his this entire health journey, he has been a very active participant, and I have observed he has said in many conversations that his wife has supported a lot. Beautiful. To achieve this goal. And like others, I need not have to spend much time following up with his diet plans and follow-up meetings and all. So for us it was smooth, and whatever diet plans and the therapies I had given, he has followed it up to 60%. Very diligently. Yeah. Very nice. And he enrolled for this gold membership to avoid the appendicitis surgery. Okay. So he was having swelling, inflammation, and pain in his appendix. Okay. Yes. So because of which he was taking painkillers and many other medications. Okay. And he lost his body weight also to like 4 kgs. Approximately 3-4 kgs he lost, and he was having the side effects were huge. He was facing this gas, acidity, bloating, and weakness. So after following the diet, he said he has gained 3 kgs and weakness is gone, and he's back to normal now. Beautiful. And in 1 week he saw significant changes, significant improvement in his health. In 15 days, all his medications were tapered and stopped. In 1 month, he reversed all his health challenges. Okay, so thank you so much, Shankarji, for trusting in GoNature and trusting in naturopathy. Along with that, there were many other benefits, like energy level increased, and you mentioned that, yeah. Gas, bloating, and this appendicitis also got it got cured. Now he doesn't face any pain in his appendicitis. And so if I would say, if he can do, everyone can do. Beautiful. And the result is in front of everyone, yeah. Like in front of the community. Yes. So the message to the community is being healthy is a success which most of the people forget to celebrate. So start celebrating their health by healing themselves. Beautiful. So thank you, Vishal, and thank you everyone. Amazing. Thank you so much, Shankar, for coming. मैं आगरा, आप लखनऊ, यूपी जिंदाबाद. बहुत बढ़िया. मैं आगरा आऊंगा तो आपसे मुलाकात करूंगा मैं. एनी टाइम. तो बहुत अच्छा एक्सप्रेस भी बन गया, एंड आपकी बोली एकदम लखनऊ वाली है, राइट? अच्छा लगा आपसे. Thank you so much. So yeah, it's all universal, right? Amazing, beautiful. So everybody just type MPTY. More power to you. Amazing, beautiful journey.